Hey guys, this is Sahil and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है. And although पिछला जो हफ्ता था, that was a very short week comprising of only 3 days, but we saw a very crazy movement on the positive side, which was actually good for all of us. Plus banking sector जो है almost all time high zone के आसपास है. So in this episode we are going to do the overall top down approach कि कौन से ऐसे sectors हैं जो कि outperform कर रहे हैं, कौन से ऐसे sectors हैं जो underperform कर रहे हैं, which we can actually skip even in this rally as well. And we are also going to discuss whether this particular rally जो पिछले एक दो हफ्ते से आई है, whether it is going to get sustained और हम all time high zone देखेंगे या नहीं. That's what we will discuss. So make sure you stay till the end of this particular episode. Plus, if you're someone who is new to our YouTube channel or even on Facebook page और technical analysis की journey आपके लिए बिल्कुल new है, still there is no need to worry. You can check out our basics of technical analysis series जिसमें हमने already 12 episodes live कर दिए हैं, so that you can have a stronger grip of every single tool or indicator which we use in our own analysis, right? So weekly mastermind for 20th of April 2025 जिसमें हम लोग overall मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे. सो द एजेंडा इज गोइंग टू बी सिमिलर. पहले हम मार्केट इंडेक्स देखेंगे, आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे. सो मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो निफ्टी 50 जो है अब बाय 4.48, सेंसेक्स अब बाय 5.25, बैंक निफ्टी बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर 6.44, मिड कैप अब बाय 3.93, इंडिया विक्स डाउन बाय 23.07 which is actually very good, and USD INR down by 0.88 which is again good for Indian markets, right? So Nifty 50 मंथली 60 को ब्रेकआउट कर चुका है, वीकली स्टिल साइडवेज में है, बट द बेस्ट पार्ट है उसने मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर दिया है. देन वी हैव डेली चार्ट जहां पे अगेन वो 60 के ऊपर है, बट वी हैव कपल ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑन द अपर साइड. देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी दैट अगले हफ्ते ये रेजिस्टेंस को थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलते हुए थोड़ा साइडवेज में जा सकता है, और एल्स देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट ब्रेकआउट भी कर सकता है. सो वी कैन ट्रेड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कंफर्मेशन. एंटिसिपेशन में ट्रेड नहीं करना है, वी हैव टू वेट फॉर प्रॉपर कंफर्मेशन एंड देन ओनली ट्रेड, राइट? देन वी हैव बैंक निफ्टी. मंथली ऑलरेडी 60 को ब्रेकआउट कर चुका है, वीकली में भी ब्रेकआउट कर चुका है, डेली में भी वॉक ऑफ द बैंड शुरू हो चुकी है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड. बट यहाँ पे जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगेन जैसे कि मैंने बताया, रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस अंटिल इट्स ब्रेकन आउट, सो वी विल हैव टू वेट फॉर दैट. एंड वंस इट ब्रेक्स आउट तो अगेन ऑल टाइम हाई जोन की टेरिटरी आ जाएगी, विच इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर द ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, right? Then we have Nifty Private Banks, monthly above 60, weekly above 60, daily भी above 60, again almost all time high के आसपास है. Then we have PSU banks which are actually underperforming as compared to private banks, monthly में 60 के नीचे, weekly में sideways, daily में 60 का breakout कर चुका है. So if we compare both of those sectors in banking, I would choose private banks over PSU banks. Then we have sector specific, again यहाँ पे जो है best performing sector was realty up by 6.95, followed by bank nifty up by 6.44, and then media 5.14 and so on. All the sectors were on the positive side, which is actually very good. Nifty IT मंथली साइडवेज है, मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है, वीकली बेरिश, डेली भी बेरिश, फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे. देन वी हैव निफ्टी ऑटो, मंथली साइडवेज, वीकली 40 का सपोर्ट ले चुका है. एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो क्लास ए बुलिश डाइवर्जेंस भी है वीकली चार्ट पे, एंड डेली में जो है यहाँ पे भी काफी बड़ा डाइवर्जेंस बना था, बट नंबर ऑफ बार्स वाज स्लाइटली हायर, तो वो डाइल्यूट हो जाता है. एंड यहाँ पे देखा जाए तो इट इज स्टिल between 40-60, so we can wait for it to break out, or else we can actually trade in the sectors which are actually performing good and sustaining above 60. Then we have metal, मंथली में 60 को रेजिस्ट कर चुका है, वीकली 40 सपोर्ट तो ले रहा है, बट मूविंग एवरेज के नीचे है, एंड डेली भी साइडवेज है, फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं, और वी कैन वेट इन दिस सेक्टर. देन वी हैव एफएमसीजी, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली आउट परफॉर्म कर रहा है. अगेन ये जो है वैल्यू बैंक सेक्टर के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लाइक अ कॉन्ट्रा सेक्टर, राइट? देन वी हैव एनर्जी, मंथली साइडवेज, वीकली 40 सपोर्ट ले चुका है, डेली 60 के आसपास है. अगेन मेक और साइडवेज सिचुएशन, 60 का ब्रेकआउट कर देता है तो मेक कंडीशन बन जाएगी, रेजिस्टेंस ले लेता है तो साइडवेज कंडीशन बन जाएगी. देन वी हैव फार्मा, मंथली अराउंड 60, वीकली साइडवेज, डेली भी साइडवेज. देन वी हैव इंफ्रा, मंथली ब्रेकआउट कर चुका है, वीकली साइडवेज, डेली भी ब्रेकआउट कर चुका है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड. सो देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी दैट इंफ्रा कुड बी द नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, बिकॉज मंथली में भी उसने ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है एंड ब्रेकआउट कर रहा है. वीकली फिलहाल अभी भी साइडवेज है, एंड डेली में भी ब्रेकआउट कर चुका है, स्लाइटली सिमिलर एज ऑफ बैंक निफ्टी, बट बैंक निफ्टी में जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, बट इंफ्रा इज नॉट अराउंड ऑल टाइम हाई. देन वी हैव रियलिटी, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली भी साइडवेज, फिलहाल अवॉइड करेंगे. देन वी हैव मीडिया, मंथली अराउंड 40, वीकली साइडवेज, डेली रेजिस्टेंस के आसपास है 60 के, सो वी कैन वेट फॉर दिस एज वेल. ऑल्दो यहाँ पे जो है अगर वो ब्रेकआउट कर भी देता है, सो वी कैन हैव अ कॉन्ट्रा ट्रेड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज वी कैन गो फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो हमने ऑलरेडी इस एपिसोड में डिस्कस किए हैं.
right? So that's what the overall analysis for this week is all about. I hope that you are absolutely clear. हम लोग stocks के बारे में इसलिए discuss नहीं कर रहे हैं because market was already in a correction mode. So we were waiting for that correction to complete so that हम लोग stronger stocks को choose कर सके. So I hope that you are absolutely clear with this overall market analysis, and I also hope that जो भी मैं और टेक्निकल सैटरडेज की जो सीरीज में एपिसोड शेयर कर रहा हूँ, यू आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दोज एपिसोड्स एज वेल, because that is the main series with which we can actually go deeper into what technical analysis is all about. Although you can also understand कि मेरा way of teaching क्या है, so that you can have a stronger grip of technical analysis, and you don't need to depend on me as well when you have a stronger grip of all of those topics, right? So that's all from my side for this epic episode of Weekly Mastermind, and I'll see you in the next one. Till then, make sure you hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.